Late, eminent Vice President ISKCON Pune. So with this, my dear friends, let us give our invited dignitaries and honorable guests a huge round of applause. Keep clapping, keep up the spirit, my dear friends. Thank you so much. It's my pleasure to introduce the theme of the session on which our honorable guest will shed light on. The theme of the session is Need to Establish Schools of Consciousness and Reality to Understand and Experience the Ultimate Truth, Almighty God. As we get set to begin our exchange of thoughts, ideas, and experiences on the theme, I request my technical team to kindly relay a curtain raiser video. Over to my technical team. The practices of focusing our attention on a single point of reference has been amply followed by different religions and spiritual groups since long. This practice has yielded spiritual upliftment for its practitioners, and in turn, they have propagated it for the benefit of all methods of meditation like yoga, vipassana, pranayama, namaz, prayer, chanting, and many more help humankind focus their attentions, their energies onto a single point of reference. There is a dire need to change the very definition of the word philosophy and its perceived meaning. Most of the saints, sages, seers, and prophets provide the pathway to inner peace and how to live in contentment with oneself. Therefore, it is our firm belief that the greatest saints, sages, seers, and prophets should be considered as philosophers and not as religious preachers only. In this session, we will throw a light on the need to establish schools of consciousness and reality to understand the experience, the ultimate truth, Almighty God. Thank you so much, dear technical team. As we get set to begin our exchange of thoughts, ideas, and experiences on the theme, I shall request Dr. Jayant Khandare, Director, MIT School of Consciousness, MIT-WPU, Pune, an accomplished academic and innovator and the Best Pharmaceutical Scientist Awardee for the welcome and introductory remark. Over to you, sir. It's my distinct honor to be here today and introduce the role of schools of consciousness that Dr. Karad sir has actually established immediately after COVID. We all know that the science, spirituality, philosophy is extremely important in today's context. If we understand the context of practicing peace in a modern world is getting extremely difficult because of philosophical, religious, scientific, business, technologies, and advancement. While there are extreme challenges today that actually we face, the science has actually gone to the extremes to look at a terrestrial space. But it has been always a dynamic that Dr. Karad sir has been mentioning about strong Indian philosophy and science established by Sant Naneshwar. And we know that a Pasayadan itself could be a world's prayer, and this has to be
percolated in the minds of Indians and the great scientific community. I would like to define a context of today's session in three aspects: philosophical, chemical, as sir always asks, what is the chemistry of a mind? That's a very intriguing question, and we have some scientists from NCL Pune and some philosophers from the field. I would like to also establish what is the biological evolution that has actually led to the understanding of human consciousness in a panel discussion. What is human capacity? And finally, actually, we'll talk about the great aspect, which is holistic aspect of human being. Can we be more healthy in the information that we are getting? Most important, can be human, a simplicity of a human being. Can we bring the values through such kind of an educational systems? You are into a world's laboratory where this dome is established, and Karad sir has been aspiring to bring science and spirituality through this kind of deliberations. And most important value of life in my own aspect is to enhance the happiness index. And I'm very glad that today's experts sitting on the dais will bring this context wholeheartedly. So it's my privilege, it's my distinct privilege, Ashish, thank you for bringing me here today for this session. Thank you, sir. Thank you so much. Please give Honorable Dr. Jayan Khandare, sir, a big round of applause. Now, my dear friends, as we move further, it is my indeed an honor and privilege to introduce our first distinguished speaker, Honorable Brahmakumari Usha Didi. BK Usha Didi is a respectful spiritual leader and management trainer with the Brahmakumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya in Mount Abu, Rajasthan. Starting her spiritual journey in 1980, she specializes in Raj Yoga meditation, delivered discourses on the Srimad Bhagavad Gita, and has mentored individuals worldwide. Known for integrating spiritual principles into modern business practices, Usha Didi has pioneered spiritual management. Her training programs promote self-management, leadership, and harmonious work environment. A sought-after speaker and writer, she bridges complex spiritual concepts with practical applications. Usha Didi also actively supports philanthropic initiatives contributing to social and humanitarian causes. Didi was also invited in the Vishwa Hindu Parishad at Chicago as a guest speaker. So we are lucky to get your holy presence, Didi. Our students and everyone present here are eagerly waiting to hear from you. A big round of applause, my dear friends. Honorable BK Usha Didi. Over to you, ma'am. This session will be live on Peace of Mind channel, Dish TV, Tata Sky, Videocon, Airtel, Jio, on all social media platforms. Thank you. Om Shanti. Greetings of peace from Mount Abu to everyone present here. पिछले 2 दिन से हम इस इंटरनेशनल पीस डोम में, जो कि हमारे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी का एक सपना था, उस सपने को हर साल एक ऐसी पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करते हुए मैं समझती हूँ सारे भारत में तो क्या सारे विश्व में एक संदेश देने का कार्य कर रहे हैं कि वर्तमान समय के अंदर आध्यात्मिक विज्ञान की आवश्यकता है। अब तक हमने स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस 2 अलग अलग चीज को सुना, परंतु मैं कहूंगी आध्यात्मिकता स्वयं में एक विज्ञान है, क्योंकि जहां विज्ञान समाप्त होता है, जहां विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं होता है, वहां उसका उत्तर आध्यात्मिक विज्ञान के पास है। जिसको कॉन्शियसनेस कहे, चेतना कहे,
और उस चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है आज के युग के अंदर, क्योंकि जब वो चेतना जागृत होगी तो व्यक्ति अपने आप में शांत भी रहेगा, सक्षम भी होगा और जो जीवन के अंदर प्राप्त करना चाहता है उसको अचीव भी कर सकेगा। हम सभी ने अलग अलग डेफिनेशंस पीस की सुनी, लेकिन जो मैंने कुछ अपने चिंतन से लाया है कि पीस क्या है। पीस इज अ डीप इनर फीलिंग ऑफ प्लेजेंटनेस एंड ब्लिस। जीवन के अंदर आज इसकी आवश्यकता है। इतना ही नहीं, इट इज अ सेंस ऑफ इनर हार्मनी, ऑफ ट्रैंक्विलिटी, कूलनेस एंड सेरेनिटी। पीस बाहर नहीं, भीतर की आवश्यकता है, उसको भीतर से जागृत करने की जरूरत है। लेकिन ये नहीं कि पीस हमें डल कर देता है। इट्स एन अलर्ट स्टेट ऑफ माइंड filled with clarity and collectedness, and it's the foundation of all inner strengths and resources. अब जिस चेतना की हम बात करते हैं वो चेतना कहाँ प्राप्त होगी, वो शांति कहाँ मिलेगी? क्या हमें बगीचों में मिलेगी, पहाड़ों में मिलेगी, जंगलों में मिलेगी, समुद्र किनारों पर मिलेगी या स्मशान घाट में मिलेगी? वहाँ तो नहीं होगी। या साइलेंस ऑब्जर्व करने के बाद भी क्या विचार शून्य होने पर प्राप्त होगी? वो तो खाली साइलेंस होगी, पीस तो नहीं कहेंगे। इसलिए बहुत सुंदर किसी ने कहा है, देयर इज सोर्स ऑफ लाइट बट नो सोर्स ऑफ डार्कनेस, देयर इज सोर्स ऑफ लाइफ, नो सोर्स ऑफ डेथ, देयर इज सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, नो सोर्स ऑफ सॉरो, देयर इज सोर्स ऑफ पीस, no source of peacelessness. Peace is not just absence of thoughts or sound or war. The source of peace is the harmonious feeling of values, powers and virtues. और इसलिए जीवन के इस क्रम में अगर देखा जाए तो हमारे जीवन के अंदर जब ये 7 गुणों का ऑरा, पीस को इसीलिए सफेद दिखाते हैं, सफेद के अंदर 7 रंग समाये होते हैं। और वो 7 रंग कौन से हैं? नॉलेज, प्योरिटी, लव, ट्रुथ, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड विल पावर। ये 7 गुणों का समूह ये हमारी चेतना है, ये हमारी कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस खाली एक चेतना नहीं, क्योंकि चैतन्यता की अभिव्यक्ति कैसे होगी? चैतन्यता की अभिव्यक्ति खुशी से होती है, ज्ञान से होती है, आनंद से होती है, शक्ति से होती है और प्रेम से होती है। तो इसीलिए कहा कि जहां ये 7 गुण हमारे ऑरा में समा जाते हैं, ये हमारी चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन उसको अनुभव करने के लिए 5 कदम आज मैं बताती हूँ। और वो 5 कदम कौन से हैं जो उसको हम जागृत भी करें, अनुभव भी करें। पहला कदम है उसका, जिसको हम कहते हैं सेल्फ डिस्कवरी। अपनी वास्तविकता को जानना, अपनी वास्तविकता को समझना। क्योंकि कॉन्शियसनेस क्या है? हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, हम कॉन्शियसनेस है, आई एम दैट कॉन्शियंट एंटिटी। लेकिन वो कॉन्शियंट एंटिटी की वास्तविकता क्या है, उसको समझना है। जैसे शरीर की वास्तविकता 5 तत्व है, तो आत्मा की वास्तविकता क्या है, उसको समझना जरूरी है। दूसरा है फिर सेल्फ रिकवरी। कुछ चीजें आ गई है जिसको हमें हटाना होगा। तीसरा है फिर सेल्फ डिसिप्लिन। भगवत गीता के अंदर बार बार भगवान ने अर्जुन से कहा, डिसिप्लिन योरसेल्फ। अपनी इंद्रियों को डिसिप्लिन करो, क्योंकि तभी तुम मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे, सेल्फ लिबरेशन। एंड द 5th स्टेप इज सेल्फ एम्पावरमेंट। तो ये 5 कदम है उसकी अनुभूति के लिए। पहला जो कहा, डिस्कवरी ऑफ द सेल्फ।
सेल्फ डिस्कवरी में आत्मा की वास्तविकता ये 7 गुण है। इसका स्वरूप बन जाना यही चेतना है, यही आध्यात्मिकता है। स्पिरिट, स्पिरिचुअलिटी इज दैट विच इज कनेक्टेड विद द स्पिरिट। आत्मा के साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं और आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं वैल्यूज। तो ये वैल्यूज का स्वरूप बन जाना। हम जब कहते हैं ओम शांति, ओम शांति मीन्स आई एम अ पीसफुल बीइंग। ओम प्रेम कहते हैं, माना आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ नॉलेजेबल बीइंग। तो इसीलिए मेरी वास्तविकता वही है। शरीर की वास्तविकता ऑक्सीजन है, शरीर की वास्तविकता पानी है। शरीर पानी मांगता है, ऑक्सीजन मांगता है। इसी तरह आज हर कोई को शांति चाहिए। क्यों? मेरी चैतन्यता उस शांति की चाहना रखती है, क्योंकि मैं वही हूं। ये मेरी वास्तविकता है। लेकिन किसी ने बहुत सुंदर कहा है, वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज एंड वी हैव लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। आज की दुनिया इंफॉर्मेशन के आधार पर टिकी है। वो ज्ञान, वो प्रज्ञा गायब हो गई है, वो विजडम गायब हो गई है। इसलिए ये 7 गुणों को स्वरूप होना ये हमारी वास्तविकता है। तभी हमें रिकवरी, सेल्फ रिकवरी होगी। रिकवरी किससे? जीवन के अंदर कई कमजोरियां आ गई है और ये कमजोरियां ही मनुष्य को कमजोर करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, स्वार्थ, ये इंसान को कमजोर कर रही है। क्यों? क्योंकि हम अपनी कॉन्शियसनेस से बहुत दूर हो गए हैं, उस चेतना से हम बहुत दूर हो गए हैं। इसीलिए ये कमजोरी हमारे जीवन में आई है। इसलिए इसको मिटाना है और उसके लिए ये चेतना को जागृत करने की आवश्यकता आज महसूस हुई है। तभी जो गीता में कहा अर्जुन को भगवान ने कि योग माना क्या? योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। इट इज द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिनिंग। स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, कि जहां हम उस एनर्जी को, चेतना की एनर्जी को एक सकारात्मक दिशा की ओर मोड़े। ये आज की आवश्यकता है, क्योंकि तभी हम जीवन के अंदर सही तरीके से फ्रीडम का अनुभव कर सकते हैं। लिबरेशन, गीता में इसीलिए कहा है मुक्ति से श्रेष्ठ जीवन मुक्ति है। शरीर से मुक्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव करना वो तभी होगा जब उस चेतना की जागृति होगी और तब हम उस 7 गुणों से, इसीलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतोगुणी है। तो 7 गुणों से स्वयं को एम्पावर करे, सशक्त करे, तभी हम शांति का वो स्वरूप बन जाएंगे। और उस एम्पावरमेंट के आधार से ही विश्व के आगे जो चेतना की हम बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर भारत विश्व के अंदर विश्व गुरु का स्थान ले सकता है, जो आज हमारे कराड़ स्वर का स्वप्न है, स्वामी विवेकानंद का स्वप्न है कि विश्व गुरु बनना चाहिए। यही खजाना हमारे पास है चेतना का, जिससे सारे विश्व को हम एक दिशा दे सकते हैं और इस संसार की दशा को भी परिवर्तित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Honorable B.K. Usha Didi, for sharing the 5 practical steps to awaken the consciousness and mentioning about the 7 qualities. Thank you so much. With this, now I request Honorable Dr. Zain Khandare, sir, the Director of School of Consciousness, MIT-WPU University, to please begin the panel discussion. Over to you, sir. Thank you, Ashish. Ashish, am I audible? Yes, thank you. I have a great
pleasure to be sitting here today and post uh, wonderful lecture by Honorable Usha Didi. Thank you for the words of wisdom. They are simpler, but not as easy to digest them. So thank you for setting a context of this session. I'm very honored today to introduce today's distinguished panelist here, Honorable Mandar Apte, Dr. Mandar Apte, who is Executive Director at Cities for Peace International Association for Human Values, coming from Los Angeles. Thank you, sir, for traveling through multiple oceans and coming here. We also have our next distinguished speaker, who is also an odd man out, who daily looks into the brains of human being for the complexities from diseases and disorders. So it brings me a great pleasure to introduce Dr. Deepak Ranade, who is one of a neurosurgeon who does spine and neurosurgeries days and nights and has been So he's an author of Speaking Tree, and he writes routinely in columns in Times of India. That's a wonderful writing that most of the Indians are aware of. I'm very happy to represent Honorable Madhuri Sahasrabudhe, Chairperson, Foundation of Holistic Development in Academic Field, coming from New Delhi. Thank you, ma'am. We have been introduced with Honorable B.K. Usha Didi. I request her to extend her stay for another 10 minutes if it is possible and contribute into this session. I have a great pleasure to sit beside one of India's distinguished scientists who has been very accomplished scientific publisher in the field of plant sciences. And he knows actually how nature has accomplished its own consciousness for whatever purpose, Dr. Ashok Giri, who is a senior principal scientist, CSIR, National Chemical Laboratory, Pune. I'm very glad to introduce Honorable Anupama Vaidya, Independent Board of Director and Advisory Board Member, Organization Design and Reconstruction Specialist. Thank you for coming from Mumbai. Thank you for being here, ma'am, today. I'm very glad to introduce Honorable Sri Sanjay Bhosle, Vice President, ESCON, who represent ESCON Pune. And nobody needs an introduction of Revered Professor Dr. Vishwanath Karad, who is patron of all this what actually you see it here. So I'd like to actually set up few questions, and I hope all the panelists would want to express their thoughts as we move on. So if everybody allows, I would like to get this into, and I would extremely sorry to introduce Dr. Ramesh Date, who has been our eminent speaker, philosopher, and thinker, and always a part of School of Consciousness. So I take a pleasure of asking my first session with Dr. Deepak Ranade. When we believe Naneshwari, and Naneshwar always referred that the whole world is one soul. So Dr. Deepak, you're a admit, believer of a Pasayadhan. I would like to set up a context of Pasayadhan as a prayer to the world. Thank you, Dr. Jayant, and my salutations to all my colleagues sitting on the dais. Professor Vishwanath Karad, whose vision has made it possible to start this School of Consciousness Studies. To just give a brief idea of the whole logic of this endeavor of School of Consciousness. In 1995, one very famous scientist was working in this domain of consciousness called David Chalmers. He put up a theory that there are two problems of consciousness. One is the simple problem of consciousness, and there's the hard problem of consciousness. The simple problem, a lot of Western
scientists and Western research institutes are actively working on this domain of finding out the answers to the simple problem of consciousness, which talks about the neural networks, which talks about how the connectivity is there between the different parts of the brain to affect consciousness. But the hard problem of consciousness, which talks about the subjective individual experience of every individual being unique, that is a problem which no Western effort is being able to address so far. That is called as a hard problem of consciousness. And in my personal experience and whatever I'm pursuing my PhD in studying this domain of consciousness, I have realized one very important fundamental, that the hard problem of consciousness can only be solved by the help of a mystic approach which has been provided by Santa Gyaneshwar. And when he talks of Swasam Vedya, that is the ability of consciousness to efface itself on its own, only then will we be able to address this hard problem of consciousness. So the entire endeavor by Professor Karad is, when we talk of science and spirituality and India being the leader and the guru for the globe as far as understanding the ultimate reality is concerned, it is our ability to address this hard problem of consciousness, which I'm very, very certain has been very well addressed already by Santa Gyaneshwar in one of his treatises called Sangdev Pasashti, which I'm studying in details, where he talks of telling Sangdeva that there's really no need for me to meet you when the source which is animating you and animating me is the same. And if one can understand the universality of consciousness, that itself will be the salvation for man and mankind also. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Deepak Ranade, for presenting the context of today's session. May I request Dr. Madhuri to put her own context? So I'm requesting everyone to actually put your own context for the consciousness and the need to start consciousness schools. Respected Dais, Vishwanath Karadji, and all others, audience, august audience. ऐसे बोला जाता है कि मातृभाषा में बात करने से समझ जल्दी आती है. So I'm going to pick up Hindi instead of English और मराठी even, क्योंकि बाहर के जगह से भी लोग आए होंगे तो हिंदी में बोलना ज़्यादा आसान रहेगा. अभी का जो सेशन है उसका टाइटल है नीड टू एस्टैब्लिश स्कूल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रियलिटी टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस ऑफ अल्टीमेट ट्रुथ दैट इज़ ऑलमाइटी गॉड. जब ये टॉपिक मैंने पढ़ा था तो ध्यान में ये आया कि हमने पिछले कुछ हजार साल से बोल सकते हैं, वी हैव फॉरगॉटन, हम लोग भूल गए हैं अपनी परिवार व्यवस्था को, जो पहली नींव है किसी भी आदमी की उगम की. ऐसे बोला जाता है कि भगवान भी अगर जन्म लेता है तो वो ऐसे ही अवतरित नहीं होता है, उसको भी इस पृथ्वी तल पर आना है तो किसी परिवार के माध्यम से ही जन्म लेना पड़ता है. अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उस परिवार व्यवस्था को, जो किसी काल में बहुत अच्छी थी, भूलते गए हैं. मेरी हिसाब से नीड टू एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस स्कूल जो है वो और कोई नहीं है, हर किसी का अपना घर है, ये मेरा विश्वास है. अगर हर किसी का घर अच्छा रहेगा तो फिर ऑटोमेटिकली उसमें एक व्यक्ति होती है जिसको सुन करके सारे लोग चलते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे पीछे में भी कराड़ जी ने उनकी माँ का फोटो लगाया है, क्योंकि मातृत्व जो है, माँ जो है वो अच्छा बहन है, ओके, बड़ी बहन भी मेरे ख्याल से माँ के जैसी ही होती है. और मुझे याद है कुछ साल पहले मैं जब उनके साथ डायलॉग कर रही थी इसी विषय में तो उन्होंने वही बोला था मुझे कि बड़ी बहन माँ के जैसी, और इसीलिए उनका फोटो लगाया है. सो घर में जो माँ होती है उसी के इर्द गिर्द सारा कुछ चलता रहता है. मेरी टर्मिनोलॉजी में आजकल जो मैं काम करती हूँ उसमें माँ को हर स्कूल की, मैंने उनकी अपनी अपनी स्कूल की प्रिंसिपल बोलती हूँ. तो मदर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल.
वो जैसे जैसे संस्कार देती है घर में, जैसे जैसे वो खुद करती है, उसी तरीके से वो फैमिली भी बढ़ती जाती है। ये जो आज के दिन हम लोगों को यहाँ बैठ करके डिस्कशन करने के लिए जो आवश्यकता महसूस होती है, उसका कारण भी है बाहर के संसार में बहुत ज़्यादा कलह है, द्वेष है, बहुत सारी निगेटिविटी भरी हुई है। सो उसका आंसर हम लोग अपने ही घर में, अपने ही पास में अगर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मराठी में जिसको कहते हैं ना, आड़ातच नहीं तो पोहरे, तो जो व्यक्ति है वो भी बहुत अच्छी तरीके से उभर करके आता है और फिर वो अपनी उन्नति, जैसे वो बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, स्पिरिचुअली भी अपनी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति जो है वो करता जाएगा। ये मेरा अटल विश्वास है। और इसीलिए हमने अपनी जो संस्था है फाउंडेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसका बेस जो पकड़ा है वो मदरहुड, मातृत्व ही पकड़ा है। उसी दिशा में हम लोग काम करते हैं और मुझे ये विश्वास है कि इस तरीके से अगर हम करेंगे तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है, काफ़ी सारी जो दुविधाएं जो समाज में है वो कम होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माधुरी जी, बहुत शुक्रिया, आपने इसको हिंदी में ऐड किया आज। थैंक यू वेरी मच। कैन आई एक्सटेंड दिस टू मिसेस अनुपमा प्लीज? Good afternoon, everyone. I'm going to start on this beautiful occasion of Navratri by saying a stotra. Sarvamangala Mangalye Shive Sarvatha Sadhake Sharanya Trambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Om Shanti Shanti Shanti. For me, this is a miracle. On Navratri, being here, this itself proves that on a wonderful, vibrant occasion, we are discussing a topic of consciousness and need to establish schools. Respected Professor Dr. Karad, you've really role modeled to us of what it means to really bring to this young generation consciousness all about. In my work that I do, I work with a lot of business leaders. I can see a little bit of restlessness in the youngsters. Friends, one day you all are aspiring to be something in life. And the biggest difference that I see today is the knowledge versus the wisdom. Information informs, बीके उषा दीदी, आपने बहुत अच्छे से बात किया. Knowledge informs, knowledge empowers to a certain extent. But it is only the wisdom which actually makes the entire difference to transform. And the biggest transformation when you grow in life is what's missing today in the educational system. And therefore, both have to coexist. It's like a railway train. You have the bogie, all the bogies are running, but they need to be in cohesive force with the engine. The bogies are the knowledge, the engine is the wisdom. Where is the wisdom coming from? You have a mobile, everyone has a mobile out over here. The mobile is useless without it being charged. It's all only information. The ability to be able to use it properly is what's wisdom. We are listening to so much of global conflicts, personal turmoils, everything put together. Knowing what is a gun, how to use it is knowledge. But whether to use it and not use it is wisdom. So the entire life, as you grow, my dear friends, is all about making choices. Knowledge may empower the information, but may not empower you with the transformation required to make these choices. And therefore, for me, it's very pertinent that we have this combination of knowledge and wisdom both put together. And that's where the schools of consciousness become extremely non-negotiable for each one of us. Thank you very much. I think very well placed. Can I request this to Dr. Mandar Apte to have your own thoughts?
So, I'm a petroleum engineer. And in order to design a solution, you need to know what is the problem. So the need for consciousness will only be strong when you have studied violence. So violence is of 3 types. It can be at the level of action, speech, and thought or feelings. So for example, I'm going to tell everyone now to participate in one process. Look at the person next to you. Even my speakers can do it. Look at the person next to you and say to that person, I hate you. Do it. Do it, sir. And the other person will respond, I'm going to beat you. Do it. Karo, participate karo. I hate you. Other person will say, I'll beat you. Were you able to do it? I saw my co-panelist here saying, I hate you. This gives you a clue that when you are conscious, negative behavior drops. You won't be able to do it. Does that make sense? So that is where the study of violence is important if you want to crystallize that yes, we need schools of consciousness. Because violence is growing and it is all not just in Israel and Lebanon. It is in every home. It is in every mind. That is where the study of different types of violence also becomes important. Suicide, depression, anxiety, gang violence, drugs, terrorism, gun violence, all these are different types of violence. And to study the reason for this violence, you will need to study trauma. Because trauma is perpetuating that violence. You cannot avoid the study of trauma. So from my perspective, that need for schools of consciousness, yes, it's there. But you cannot avoid study of violence. Because only that will help you design solutions. And my final question is violence all that bad? Is violence bad? It depends. Especially with my esteemed ISKCON followers here. Your lineage has taught us something. So that is where the choice comes, right? That is what Anupama ji was saying. So this study of the problem will help you design the solution. Thank you very much, Dr. Mandar Apte, putting this very graciously from as an engineer. Thank you for engineering this context. Can I request Honorable Usha Didi to express a little bit about how did you actually enter into spirituality, what you practice? When was that moment actually led you to decide to do what you do wonderful assignments at your center? Actually, I'm born in Africa. Studied there, I grew up there. And it happened, so it was Diwali time. And we had a huge celebration during Diwali time. All the Indians used to gather and celebrate the festival together. And there was a young man who had initiated the whole celebration. But just 2 days before the celebration, he met with a car accident. And he died on the spot. And his uncle who had invited him, when he got the news, he had a heart attack. So he also died. So 2 members of the family died together. And the whole celebration turned into a mourning occasion. So we had all gathered together, and there a Brahma Kumari sister had come to give a message on peace, to give the knowledge on soul, consciousness.
what is the soul, the immortality of the soul, and how it has just changed this costume. Bhagavad Gita explains very beautifully the concept of the soul and its immortality. And when Arjuna was asked to stabilize himself in his Swadharma, normally people explain to us that Swadharma means he was reminded of his Kshatriya Dharma. But Bhagavad Gita is not for Kshatriyas, it is for everyone, total humanity. So the Swadharma of the soul is something else. So that led me into going deeply what Bhagavad Gita teaches us and what it has to offer. And I realized the beauty of Bhagavad Gita and Mahabharata and the beauty that Maharshi Ved Vyasji, when he wrote Bhagavad Gita, actually, he saw 5,000 years ago the present time and how the psychology would be in the present time. So the characters that he chose, like Duryodhana, दुर्योधना को हम कहते हैं धन का दुरुपयोग करने वाला. स्थूल धन की बात नहीं है, बौद्धिक धन, चारित्रिक धन का दुरुपयोग करना. तो आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था. दुशासना, आज शासन में ऐसे लोग हैं दुशासन करने वाले. Then I saw the beauty के एक एक इंद्रियां, दुर्विमोचन, दुर्बुद्धि, दुर्मुख, दुष्कर्ण, each and every sense organ was filled with that deceit, दुष्टता. और धृतराष्ट्र के राष्ट्र को भी जब अंधापन कैप्चर करता है, मेंटल और इमोशनल अंधापन, जब व्यक्ति अहंकार में अंधा हो जाता है, जब व्यक्ति स्वार्थ में अंधा हो जाता है, तो राष्ट्र की हालत क्या हो सकती है, जो आज प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर हम सभी देखते हैं. ऐसे समय पर ही भगवत गीता की आवश्यकता है. ऐसे समय पर ही ये कॉन्शियसनेस को जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है. इसलिए सब विकृति चारों तरफ दिखाई देती है. तो आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए वो भगवत शक्ति जो सोर्स है, उसी से अपने आप को जोड़ना, उस जोड़ने को कहा जाता है योग. और उस योग से ही आत्मा की बैटरी जब चार्ज होने लगती है, तब हम अपने जीवन को अनेक प्रकार की इस दुष्टता से मुक्त कर सकते हैं. पांडव सही अर्थ में बन सकते हैं. 100 कौरव माना आज की दुनिया 100% अगर लिया जाए, उसमें खाली 5% अच्छे लोग हैं जो पुनः विजय प्राप्त करेंगे दुष्टता के ऊपर और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे. Thank you. So thank you, Usha Didi. I think you also put this into a gist that this 5% of people who have consciousness can probably bring this impact in 95% of people who probably are not conscious today. So thank you for sharing your personal story. When we speak about Dhaneshwar, sir always like to speak about Einstein. And Einstein has very rightly said that science without religion is lame and religion without science is blind. So in this context, I would like to come to engineer turned philosopher, Honorable Ramesh Dateji, to express, the interface between science and spirituality. Thank you very much. I have a different opinion. Everything is conscious. So you don't have to teach consciousness to anybody.
The main problem with consciousness is it is a very different thing. It exists everywhere, but it is covered with lot of other things. And what you have to learn is how to uncover the things which hide the consciousness. In Ishavasya Upanishad, it is described very nicely that consciousness is hidden in a golden ornamental like a pot, and you have to uncover its face to understand the consciousness. What is the difference? In our day-to-day life, we use lot of tools to live. Say, for your livelihood, you need lot of tools. If you are an artist, you need instruments for artists. You need knowledge how to use that. But consciousness is such a different thing that you have to learn how to throw away the tools you use. Now, the most common tools we have as a human being is our body, our senses, our mind, and our intellect, and our ego. All these things help us for living. But consciousness is existence. Existence doesn't need anything for its existence. So what you have to learn is how to throw away your attachment with the body, your attachment with the senses, your attachment with the mind, and attachment with the intellect and ego. So a school is needed to teach these things, how to throw away the equipments you use for in your daily life to achieve what you are. You all are, we all are, including from atom to the human beings, all are conscious. But they are covered. The consciousness is covered by something. And a school is needed to teach how to uncover the consciousness. Thank you. Thank you, Ramesh sir. You have been always on guiding principles to our school, and you can actually speak hours on this actually topic. I would request now to Dr. Ramesh Date, who is an eminent philosopher and thinker of ISKCON Temple, to express his thoughts about what they do. हरे कृष्णा। तो मेरे दो शब्द बोलने के पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले मैं विश्वनाथ जी कराड़ सर, जिनको मैं 3 दिन पहले ही उनके ऑफिस में मिला था, और इन्होंने अपने ऑफिस में मुझे एक वीडियो दिखाया था जिसमें सर ने 130 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने जिस हॉल में पहला भाषण दिया था, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाला, वो स्टोरी हम सबको पता है। उसी हॉल में विश्वनाथ कराड़ सर का एक बड़ा सम्मान वहाँ किया गया, और ये 130 साल के बाद घटना घटी थी कि एक भारतीय व्यक्ति को जिस हॉल में स्वामी विवेकानंद को आदर सम्मान दिया था, उसी हॉल में हमारे सर जो है विश्वनाथ सर, उनको आदर सम्मान मिला है। उस दिन मैं सर को बोल रहा था कि ये सम्मान सर सिर्फ ये हमारे भारतीयों का सम्मान है, हमारे सबका सम्मान है। और सर की, विश्वनाथ सर की भावना तो ये थी कि ये सम्मान संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की है। हमें पता है कि मॉडर्न एजुकेशन हमें स्किल्स देता है, वैदिक एजुकेशन हमें कैरेक्टर देता है। मॉडर्न एजुकेशन हमें डायनामिज्म देता है, वैदिक एजुकेशन हमें विजडम देता है। मॉडर्न एजुकेशन हमें विजय देगा, वैदिक एजुकेशन हमें विनयशीलता देगा। मॉडर्न एजुकेशन प्रभाव के बारे में बताएगा,
वैदिक एजुकेशन कारण के बारे में बताएगा। मॉडर्न एजुकेशन तंत्र और यंत्र के बारे में सिखाएगा, वैदिक एजुकेशन मंत्र के बारे में सिखाएगा। हमारे एक स्वामी थे, स्वामी गौरांग जी करके, और वो ब्रिटेन से, मतलब लंदन से फ्लाइट से किसी दूसरे शहर में जा रहे थे, और वो फ्लाइट में अपना जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तब उसी फ्लाइट में एक शराब पीकर एकदम पीक पे गया हुआ व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा, और गौरांग स्वामी के बाजू में एक लंदन की ब्रिटेन की एक महिला बैठी थी, और वो गौरांग स्वामी को बोली कि आपके मंत्र के द्वारा इस शराब पीने वाले को कंट्रोल करो। आप जो चैंटिंग कर रहे हैं, इस चैंटिंग के द्वारा इस शराब पिए हुआ आदमी को कंट्रोल करो। तो स्वामी गौरांग जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने बोला कि आई एम चैंटिंग फॉर कंट्रोलिंग माई सेल्फ। मैं मेरे जप मेरे स्वयं को नियंत्रित करने के लिए कर रहा हूं। सो मॉडर्न एजुकेशन हमें बाह्य नियंत्रण करने की कला सिखाएगा, लेकिन वैदिक एजुकेशन हमें स्वयं पर नियंत्रण लाने की कला सिखाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हमें पता है कि टेक्नोलॉजी का कई जगह अलग अलग जगह उपयोग हो रहा है, और ये करते समय उस टूल का पीछे का उद्देश्य भी हमें समझना चाहिए। चाकू का उपयोग हमें सब्जी काटने के लिए भी होता है, लेकिन किसी का गला काटने के लिए भी होता है। तो उद्देश्य सही होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा वैदिक एजुकेशन जो है वो हमें बहुत सही उद्देश्य जीवन का दिखाता है। तो एक 360 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मतलब क्या? तो वन शुड बी सोशली सेंसिटिव, पॉलिटिकली अलर्ट एंड स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब। सामाजिक संवेदनशीलता हमें रामायण से मिलती है, राजकीय जागरूकता हमें महाभारत सिखाता है, और आध्यात्मिक तन्मयता हमें श्रीमद् भागवतम सिखाता है। रामायण हमें सामाजिक संवेदनशीलता सिखाता है और सिखाता है हाउ टू लिव। महाभारत हमें राजकीय जागरूकता सिखाता है और सिखाता है हाउ टू लीड। और श्रीमद् भागवतम हमें आध्यात्मिक तन्मयता सिखाता है और वो सिखाता है हाउ टू लव। 360 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, लिव, लीड एंड लव। यही भगवान कृष्ण ने गीता के ऊपर ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र में, और यही 700 गीता के श्लोक हमें यही दिशा देते हैं। और आज इस डोम में मुझे इतना आनंद लग रहा है कि हमें यहाँ उपस्थित सब जो अलग अलग स्टैचूज है, आगे जाकर उन संतों का सिर्फ नाम भी लिया तो भी हमारे जीवन में भक्तिभाव पैदा होगा। एक एक संत ने एक एक गीत लिखा है। कृष्ण ने 700 श्लोकों का गीत लिखा था, तो हमारे संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी ने विट्ठल के ऊपर 4500 अभंग सिर्फ 42 वर्ष के आयु में लिखे। अपने 16 वर्ष के आयु में संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज, इन्होंने 9500 अभंग लिखे हैं। संत चोकामड़ा, उन्होंने 365 अभंग लिखे हैं। गुरु ग्रंथ साहिबा में संत नामदेव ने 63 अभंग लिखे हैं। तो ये सब अभंग, ये गीता, ये भागवत, ये हमारे भारत की विरासत है, ये हमारे भारत की वारसा है। तो इसलिए हमें पता है कि इजराइल का स्पेशलाइजेशन है एग्रीकल्चर, जापान जर्मन का स्पेशलाइजेशन है ऑटोमोबाइल सेक्टर, और हमारे भारतीय लोगों का स्पेशलाइजेशन है स्पिरिचुअलिटी। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज MIT में इस प्रकार का विज्ञान के साथ अध्यात्म का प्रयोग किया जा रहा है। जब से विज्ञान की बात आती है तब एक्सपेरिमेंट यानी थ्योरी की बात आती है, जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तब थ्योरी और रिलीजन की बात आती है। और ये दोनों चीजें विश्वनाथ कराड़ सर ने आज यहाँ लाया है। सभी संस्थाओं को हमें सर ने आमंत्रित किया। मैं सर को धन्यवाद दूंगा। हरे कृष्णा। Thank you, Sanjay ji. Very well put. Your quotations very apt to the session today. While we know that whole world has one soul, I would like to disagree on this because I have here Dr. Ashok Giri. We still are puzzled actually what was the purpose of formation of an universe and how did it actually formed it. We are not able to understand it. So there is also other word, that's the plant sciences, bacteria, as we say that even a single cell has its own consciousness and often it might actually have a disformation. Ashok has been working in a plant sciences. So Ashok, I would like to know from you, does plants have consciousness? Does actually smallest of the species on the earth, who is the basis and genesis of our life, do have a consciousness? Yeah. Thank you, Jayant, for giving my introduction. I would like to start with Om Shanti.
And of course, thank you to Vishwanath Karad for bringing such a subject for a discussion. So I would like to put consciousness into perspective. The one perspective is more of scientific way that what we look, and the other perspective is how, as a human, we interpret it. So I will try to finish in maybe 2 to 3 minutes. So when I was asked to give a talk on consciousness and realities and why it is really needed, such science has to be studied. So when I was thinking, when this Mother Earth was born, and then when actually the life started, so there were a lot of reactions were happening on this earth. When a small part of sun fell somewhere. And that's how the Mother Earth has been born. So the molecules, I feel the molecules, and especially for the student community, I would like to mention that molecules, in my opinion, not only cells, but molecules has the consciousness. And why I will explain you, because the molecules are intelligent. Scientific community has accepted that molecules are smart and intelligent. And I believe if you wanted to be a smart or intelligent, you need to be a consciousness. And all the life, for example, what we see today, from bacteria to human, all life is, what is it? Basically, it is a molecules. Billions of molecules are there with us. And how we train these molecules decides the personality. And I will give you a small example. As Vishwanath ji always mentioned that cell is important. So yes, of course, cell is important, but if you can imagine, one cell differentiate into several organs. So DNA is the same, but how this DNA is expressed and how these molecules becomes conscious, how these molecules controls these reactions actually builds the human body. And the way we talk about consciousness is probably in a different perspective, but I would like to mention, at least in this great hall, that how we can train these molecules to become a real consciousness. And Sattva Dhaneshwara is the best example for that matter. And I see as a scientist, a great scientist in, I will say in the Sattva Dhaneshwara. All of you know, or some of you might know, that when you want to identify the plant, the most important character is a flower. And that was discovered in 18th century. And that is what we called him as a father of taxonomy, Carl Linnaeus. But look back our history and our literature. Sant Dhaneshwara said in 13th century, Zhade olakavi phule. Zhade olakavi phule, jana olakavi bole. So I don't know, I gave this talk in a taxonomy conference, and I said, you need to decide who is the father of taxonomy. Sant Dhaneshwara said in 13th century, if you want to identify the plant, Zhade olakavi phule. Now, we never looked into the scientific aspect of it. So how we train these molecules, I think a lot has been talked about Sant Dhaneshwara, but I would like to really bring one point and then end my discussion. So as all of you know, if somebody gets angry, a more elderly person or more experienced person goes to make the person cool. You know, Sant Dhaneshwara was a great philosopher. I don't have to introduce in this hall. Everybody knows, but when he gets upset because of some reason, and he puts his door closed, and that time, Muktabai, his younger sister, comes and tells something, and which I always inspired when I was in 3rd or 4th standard. I learned this, and still I feel what a great molecule she has trained in herself. And what she says, it is in Marathi, so some people might not understand, but you should really see this. She says, Aho krodh yave kote. Aho krodh yave kote, jagi apana nikote. Aho krodh yave kote, jagi apana nigote. जीब दातानी चावली कोणी बत्तीशी ताडली. जीब दातानी चावली कोणी बत्तीशी ताडली. थोर दुखावले मन पुढे उदंड शहाणे. थोर दुखावले मन पुढे उदंड शहाणे. चणे खावे लोखंडाचे मग ब्रह्मपदी नाचे. चणे खावे लोखंडाचे मग ब्रह्मपदी नाचे. मन मानून उन्मन करा ताटी उडत ज्ञानेश्वरा.
So this gives me so much inspiration that what a literature, what a kind of thoughts a 12-year girl tells to her brother not to get upset because you have to do a great karmas. You have to do, and you are already doing it. And that is what I feel. We need to understand this consciousness, how we can train these molecules. Because I work on enzymes, I work on small molecules, and I know that how these molecules control the several reactions in the body. So that means how we can control that consciousness, and that's why I strongly believe that the school, which was probably the first in India, started by Vishwanath ji, School of Consciousness and Reality. I think these molecules needs to be studied, how they become a conscious, whether it is DNA or whether it is RNA or whether it is a protein or whether it is a small molecule. I feel this is going to bring a lot of innovations, a lot of new things that we as a human being can understand what is a consciousness. Thank you. Thank you, Ashok, for bringing actually the code of life is DNA. And I would like to have a quick comments from you. I'm going to ask a very say a question which might be little sensitive at this point of a time, but that's what is the purpose, one of an objective of a school of a consciousness. Then when everything is evolving, probably the humanity is the most stable by Darwin's law or the nature over there. I would again go back to Dr. Deepak. In a modern world, how do you feel that, you know, the leaders, politicians, scientists have a role in actually stabilizing this whole world, which is actually going in a turmoil now? So what is your comment on this? And what school of science consciousness can actually, you know, impart its role? A very quick round. It's a very important and relevant question in light of what is the geopolitical situation prevalent in the globe right now. I think if we understand and study consciousness and really understand its true purport, we will first and foremost be able to shift our focus from religion to spirituality, which is, I think, the most important thing that needs to be done. Because most of the unrest or wars or disruptions in the world are because of what we might call as an anthropomorphic understanding of God. So everyone's understanding of God is having its own connotation, and then hence there's so much of differences of opinion, religious sects, orders. You know, one very beautiful thing which I feel we should understand, that there is definitely beauty in diversity. There's no denying that. But even more beautiful is if we can understand the unity that is the foundation of this diversity. And if we can understand the unity of the foundation as the foundation of this diversity, then rather than asserting our own separateness, our own uniqueness, we can celebrate our common foundation and understand that we have a common source. And if we have that common source, then I think it will be the end of all the differences of opinion and wars and misunderstandings. And I think there alone, if we can come down to what, like Santa Dhaneshwar, whom I'm a great ardent devotee of, you know, just to introduce concluding my statement, science has always gone by reductionism. It is always trying to find out what is smaller than the molecule, what is smaller than the atom, what is subatomic. Then came the advent of quantum physics, which tried to understand what are the rules governing the quantum subatomic world. I had the privilege of even visiting the CERN Large Hadron Collider. But at the end of the day, we still don't get answers as to whose origin, whose brain was it to start this to talk of hadrons or electrons or quarks. There's no understanding of that. So eventually, even science is now surrendering and offering its total salutations to a sort of a mystical force. And that mystical force is probably what India can explain to the world, which we call as Satchidanand, which is the source of this entire creation. And when we talk of the Upanishadic truths, I firmly believe in that if the world is not a creation, but it is a manifestation of a Brahma. If I understand and if I can convince the world that we are just a manifestation of an underlying unity called Brahma, I think it will be the beginning of the elevation and transcending of the humankind
to a super conscious status where there will be peace and universal bliss. Thank you. Thank you, Deepak. I think, breaking of electrons led to a lot of, good things to the society, but it also started devastations, and we know it. Madhuri ji, आपका keynote statement. इसी टॉपिक पर ना मुझे ऐसे लगता है कि हर व्यक्ति को अगर अपने अंदर की परा और अपरा शक्ति और उसमें अंतर इसका रियलाइजेशन हो जाता है और वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा पक्का, कम से कम मरते समय तो पक्का ही होगा। ये जब हो जाता है और वो जल्दी कैसे लाना है, इसके लिए नीड ऑफ स्कूल ऑफ कॉन्शियसनेस। और वो आज भी मैं कहती हूँ कि वो फैमिली के माध्यम से जितना अच्छी तरीके से जाता है। एक एग्जांपल देती हूँ उसके लिए। निर्भया केस जो हुई थी, कुछ ही लोग उसमें इन्वॉल्व थे। हमारे बच्चे क्यों नहीं ऐसे केसेस में इन्वॉल्व होते हैं? कभी हमने सोचा है? कभी फैमिलीज की एनवायरनमेंट पर कभी स्टडी किया है? कभी नहीं किया है। फिर से मैं बोल रही हूँ कि फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन, समाज की जो ब्रिक होती है, किसी बिल्डिंग की जैसे ब्रिक होती है, वैसे पूरे समाज की फैमिली इज़ अ ब्रिक। उसके ऊपर में कभी भी कंपैरेटिव स्टडी हुआ नहीं है। मेरे तो इसमें नहीं है, रिसर्च पेपर्स मैंने भी पढ़े हुए हैं, नहीं है। सो इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है ऐसे लगता है। और वो कौन तैयार करता है? फैमिली कौन तैयार करता है? तो फैमिली मेंबर्स तैयार करते हैं। उनके अंदर में जब इस सारी सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में नहीं मालूमात भी होगा, जानकारी होगी कि देयर इज समथिंग, फिर भी वो बहुत अच्छी तरीके से फैमिली को ग्रो कर सकते हैं। और फिर जो हम लोगों को एक पीसफुल सोसाइटी की आशा कर रहे हैं वो हो जाएगी, ऐसे मुझे लगता है। उसके बिना मेरे ख्याल से हर कोई अपना अपना प्रवास तो करता रहता है, लेकिन किसी नर्सरी के बच्चे को हमने ग्रेजुएशन की स्टडी दी, ये सारे जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अध्यात्म के बारे में, जिसको बेसिक जानकारी है वो उसमें एक स्टेप ऊपर जा सकता है। जिसको बेसिक्स ही पता नहीं है उसको आगे का कैसे पता चलेगा? सोसाइटी में आज वो स्थिति है हमारी सोसाइटी में। सोसाइटी केवल यहाँ बैठे हुए लोगों की नहीं है, बहुत वास्ट है। और हर किसी को जब ये सारी नॉलेज कानों पर पड़ेगी, कानों पर कहाँ से पड़ेगी? तो घर के स्टोरीज के माध्यम से पड़ेगी, जो डिस्कशन होता है उसके माध्यम से बचपन से पड़ेगी। फिर वो खुद की अपनी इंटरेस्ट ले करके आगे बढ़ता जाएगा उसी रोड पर। सो ये जो हम लोग एक इंजीनियरिंग या ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में आने के पहले हम लोग एक क्या उसकी कौन सी टेस्ट बोलते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होना है, डॉक्टर होना है, एप्टीट्यूड टेस्ट। वैसे एप्टीट्यूड टेस्ट के जैसा ही मुझे ऐसे लगता है ये होना चाहिए। और उसके लिए हर किसी की ग्रेड समझ में आनी चाहिए। ग्रेड समझ में आने के लिए उतना अवेयरनेस लोगों के बीच में होना चाहिए। और वो और कोई नहीं करने वाला है, हम ही लोग करने वाले हैं। जो जागरूक लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम ही सारे लोग अगर अपने आसपास के लोगों को ये सारे पूछते हैं, करते हैं, बताते हैं, अवेयरनेस लाने का प्रयास करते हैं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर वो दिन जो हम लोग वेट कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम का, विश्व शांति का, वसुधैव पूरा विश्व एक कुटुंब के जैसा रहेगा, उसके बारे में हम सफल हो सकते हैं ऐसे लगता है। तो MIT-WPU हमेशा शिक्षित नहीं लेकिन सुशिक्षित विद्यार्थी पैदा करने का कोशिश करता है। सुशिक्षित से भी सुसंस्कारित बोल सकते हैं। शिक्षा नहीं होगी, सुसंस्कार होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। अनुपमा जी, आप कैन यू प्लीज पुट योर। बैठे बैठे यहाँ पे बहुत डीप थॉट्स गेन कर रही हूँ मैं। I'll only like to say कि let me go back to say why we need to experience the Almighty God, okay? And the geopolitical situations जो हमारे सामने पोज होती है, क्या ये लीडर्स अगर उनको ये पता चलता था, this consciousness that we are talking about, if everything fell into place, they would understand why we are here. If you look at the universe, okay, पूरा यूनिवर्स देखेंगे तो हम एक जीव मात्र है। Even if we live 100 years, that's nothing compared to what this universe is all about. और वो सेंस ऑफ पर्पस जब तक हर एक पर्सन को नहीं समझता है,
जोपर्यंत ते कळत नाही तोपर्यंत वळत नाही, राइट? जब पता चलेगा तभी हम उस पर एक्शन ले लेंगे. एंड फॉर दैट द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्ट, courage, resilience, fairness, empathy, compassion, they're very, very critical. It's the right side of the brain. Doctor sir, आप neurosurgeon हो, so forgive me. But in a bit of my work, left side में आपका structure और result orientation है, लेकिन right side में आपका empathy है, आपका out of the box thinking है. अगर ये पूरा का पूरा इकट्ठा ब्रेन चालू रहेगा, then only will we find peace. And I think so the geopolitical leaders need to go back to schools of consciousness and reality. It's high time that we call for action. Absolutely. Thank you. Since you mentioned about geopolitical component and Dr. Mandar Apte, who is probably going to vote in his own country very soon, how can you bring this to politicians to learn all this, actually? How can you engineer this thought in politicians, especially in your current country? I started with working with gang leaders. In Los Angeles, as you know, it is the birthplace of gangs. So politicians are also gang leaders. So you can learn a lot from the real gangsters and apply those learnings to the real gang leaders. See, the value of light is when there is darkness, isn't it? Otherwise, there is no value of light. So value of peace is through when there is higher rays of violence in the world. What happens is, we watch it, but we are desensitized. We are immune. We say, ये मेरे साथ नहीं होगा, ये मेरे बच्चों के साथ नहीं होगा. इधर हम गलती करते हैं, because पूरा दुनिया connected है. जैसे इस साल, this year, in the first 3 months, 15 Indian American students in the United States have been violently murdered, have committed suicide, and have had drug overdose. We are sending our children for educational purposes to a country which is prosperous, but only prosperity is not enough. What will you do with the gold? If you're having a golden bed, but you're not able to sleep because your money is stuck in the stock market. So I think that is where we have to realize the value of the knowledge that we all are speaking, but the value will only be realized when you apply it. When you make other people who need it, you go to them and you show the value. That is when you will also realize what power we are sitting on. Otherwise, peace की बात करके क्या फायदा है? अगर आप students हो अभी, आपने ये सोचना चाहिए मेरा life का purpose क्या है? Ultimate reality is part of the discussion, no? What is the ultimate reality? I'm going to die. It's the ultimate reality. What am I doing? That question we have to ask every few months. कर क्या रहा हूँ मैं? मेरा time तो जा रहा है. So that is where, you know, this word purpose, you have to repurpose your own life at every point of time. Thank you. So can I request Usha Didi to give a message to our students, actually, how they'll come there. How to balance their, you know, and expectations of life in coming days versus balance, actually, you know, discipline versus that peace in mind. भाई लॉस एंजलिस की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वैल्यू तभी रियलाइज होगी जब वायलेंस हो या एक्सट्रीम्स हो. लेकिन एक प्रयोग हुआ था जापान में, और जापान में ये प्रयोग किया गया था कि एक कंपनी में जिसको भी गुस्सा आता है किसी के ऊपर, चाहे उनके बॉस के ऊपर, चाहे उनके कलीग के ऊपर, तो वहां पर एनवायरनमेंट खराब करने के बजाय एक कमरा बनाया था नीचे बेसमेंट में. वहां एक बूथ रखा था और कहा जाकर के गुस्सा निकाल के आओ.
चाहे बॉस के ऊपर, चाहे कलीग के ऊपर, जिसके उसको बूथ को ये समझो कि ये है। तो पहले देखा गया 15 दिन में लोग एक बार जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। 10 दिन में जाने लगे, 5 दिन में जाने लगे, 3 दिन में जाने लगे, और फिर क्यों लगती थी उस रूम में जाने के लिए? तो ये संस्कार की बात है, वो संस्कार बढ़ता जाता है। जब जापानीज ने ये देखा कि दिस इज नॉट वर्किंग, इट इज गेटिंग वर्स्ट, तो फिर उन्होंने नीचे बेसमेंट में मेडिटेशन रूम बना दिया और कहा जब भी आपको गुस्सा आए आप नीचे जाओ, मेडिटेशन करो, मेक योर माइंड साइलेंट, और साइलेंस करके आप अपने मन को उस शांति में ले जाओ और फॉरगिव करो। जिससे भी प्रॉब्लम है उसको फॉरगिव करना शुरू करो। तो देखा गया कि पहले लोग जो रोज जाते थे, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम होने लगी और फिर कोई नहीं जाता था। भावार्थ ये कि वायलेंस समझते समझते कहीं ऐसा न हो कि हमारे अंदर भी वो वायलेंस, क्योंकि कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो इसीलिए हम अपने स्टूडेंट्स को, आने वाली जनरेशन को पॉजिटिव बातें दें, और पॉजिटिव बातें देते हुए उनके माइंड को जितना पॉजिटिवली फंक्शन कर सके, एक दिशा यही मिले, तो जरूर है कि आने वाले समय में भविष्य उनका उज्जवल होगा। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में तनाव के कारण बढ़ेंगे, परिस्थितियां बढ़ेगी, ये सब बढ़ेगी, लेकिन ऐसे समय में अगर मेरी स्थिति शांति की होगी, आनंद की होगी, वो वाइब्रेशंस जितने हम फैलाएंगे तो शायद वो एक्सट्रीम्स जो है वो कंट्रोल्ड हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और हम एक बेटर फ्यूचर आने वाले समय के लिए भी क्रिएट कर सकेंगे। यही कॉन्शियसनेस की जो बात है कि इसकी आवश्यकता इसलिए है कि आज हमें अपने जीवन के अंदर भी जो विकृतियां हैं उन विकृतियों के ऊपर विजय प्राप्त करना है, और विजय प्राप्त करके सच्चा पांडव बनने की आवश्यकता है। कौरव न बने, कौरवों के साथी न बने, पांडव बने। पांडव इसीलिए 5 दिखाए गए, 5%, 1% है युधिष्ठिर, कि कितनी भी टर्मोइल हो, स्थिर बुद्धि, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड को लेके चलो, जब आप आध्यात्मिकता को लेकर के चलेंगे। भीम स्ट्रॉन्ग विल पावर को लेकर के चलो। आजकल युग में लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, आध्यात्मिकता उनके जीवन के अंदर विल पावर को बढ़ाएगा। अर्जुन जो पॉजिटिव बातों को अर्जन करने वाला है, ग्रहण करने वाला है, बिकम अर्जुन, हर पॉजिटिव बात को ग्रहण करना सीखो। नकुल, जीवन में नियम और सिद्धांत की आवश्यकता है, उसी से अपने जीवन को चलाओ। और 5वां सहदेव, हर अच्छे कार्य में सहयोग देना आरंभ करो। ऐसे जब पांडव बनेंगे, क्योंकि मैंने ये 5 क्वालिटीज हमारे कराड़ सर में देखी, स्थिर बुद्धि है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, अच्छी बातों को ग्रहण करना वो जानते हैं, नियमों से चलते हैं, सिद्धांतों से जीवन जीते हैं, और हर अच्छे कार्य में सहयोग देते हैं। तो अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनैलिटी को अगर ऐसे बनाएंगे तो आने वाले समय में हर युद्ध में, हर संघर्ष में विजयी होंगे ही, ये गारंटी है। यही सब। So nice. So let me come, Dr. Mandar, from left-hand side to engineering. We also have one engineer on right-hand side, Dr. Date. Yeah, thank you. There are 2 things. One is looking at a thing by parts, and other is looking at a thing as a whole.
Now the conflict arises between parts. There cannot be any conflict if a whole exists. So what thing we have to learn is that this physical body is not the only existence. There is a subtle body behind this gross body. The gross body comes and goes, maybe in 100 years, less than 100 years, but subtle body remains till the universe or the concept of the universe remains. So you exist as a subtle body for a very long period, just like a universe. And when you have to, as a pure consciousness is beyond the subtle body and the gross body. But not considering what consciousness is, we can concentrate on a relative consciousness, and we should not think as my body is different from your body, my family is different from your family, my nation is different from your family. You see, all these arise due to the language. But language arose only 1 lakh years in the past. What was there? Was not there a solar system beyond this, say, 1 million years? The solar system exists for 5.5 billion years. The universe exists for 13.7 billion years. So the existence is there, and all this existence was a whole one unity. By language, we divide it in pieces, and that is one basic obstruction which is created by the human beings by their language. And we have to understand that there is a basic unity in the universe. You have to forget the differences created by the language. And so Upanishad says it very well, that all this description or variety or the divisions are due to the uses of language. But forget the language. Remember that the universe is 13.7 billion years old. The Earth and solar system is a few billion years old, and that is a whole existence. The solar system doesn't distinguish between a sun and a Earth, or the planet and a sun. There is no difference. So we have to learn thinking as a whole, and then only these conflicts will go. Thank you. Thank you. Thank you. So we speak about so many philosophers, right? Are we going to practice the same that philosophy has been actually embedded? But I would request Sanjay, since you practice one philosophy, we have a great philosopher, sir, here, and you want to express something about sir. Great. Yes. तो अभी जस्ट सर ने पूछा कि हम देखते हैं कि हमारे गीता, भागवत, रामायण, ये जो अलग अलग ग्रंथ है, जिसमें भगवत गीता में एक चीज़ देखा गया तो उसमें व्हाट टू डू नहीं लिखा है, इसमें व्हाई टू डू लिखा है, क्योंकि हमारे कार्य के पीछे का उद्देश्य ये कार्य अच्छा या बुरा ये कर लेता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये शास्त्र है, और इसी में इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद है, जिन्होंने भगवत गीता, भागवत, रामायण, इसका प्रचार पूरे विश्व में 176 कंट्रीज और 1800 मंदिर के माध्यम से किया, उन्होंने बहुत एक अच्छा सेंटेंस लिखा है कि फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, एंड रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज अ सेंटिमेंटलिज्म, फैनेटिज्म। सो हमें एक समझना चाहिए कि एक दूसरे के एक ही कॉइन के दो बाजू है। विज्ञान करते समय हमें भावनाओं का कदर रखना पड़ेगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध ये सिर्फ कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं था, ये युद्ध बुद्धि और भावनाओं का युद्ध था। अर्जुन ने जब द्रोणाचार्य और भीष्म को देखा, तब उसके मन में उसका स्वभाव कहने लगा कि इनके प्रति तो मुझे आदर है, प्रेम है। लेकिन जब दुर्योधन और दुशासन को देखा, तब उसका स्वधर्म कहने लगा कि इनके साथ तो युद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ना स्वधर्म की बात की, ना स्वभाव की बात की, भगवान ने उसके स्वरूप की बात की। कि हमें पता है कि ये मॉडर्न एजुकेशन पदार्थ के बारे में बात करता है, लेकिन आध्यात्मिक तत्वज्ञान ये परमात्मा के बारे में बात करता है, आत्मा के बारे में बात करता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कब तक रहूँगा,
और मुझे क्या करना है। परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति, काल और कर्म के बारे में गीता में लिखा है और मुझे ऐसा लगता है कि गीता एक डिसीजन बुक है, ये इंस्ट्रक्शन बुक नहीं है, क्योंकि वो व्हाट टू डू नहीं सिखाता, व्हाई टू डू सिखाता है। और इसीलिए ये ज्ञान हमें लेना चाहिए कि जब व्हाई टू डू सीखते हैं तो सभी के प्रति हम प्रेम और आदर की भावना करेंगे, सभी को सम्मान करेंगे। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तब प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, पशु पक्षियों के साथ भी जुड़ना चाहिए और परस्पर में भी हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। Thank you, Sanjay ji. And I request Ashok to have his short, brief ending notes. So thank you again. I just wanted to give a couple of messages as he started, Atesar started, that we need to not worry about the language, but universe or nature uses only one language, and that is the chemical language. And that we need to understand in all perspective. The most important thing I would like to tell the students, like how, I mean, we become a consciousness and we are all talking about all the philosophies and so on. In my opinion, it is very important that we should at least keep ourselves 10 minutes in a day. And we should talk to ourselves. In modern era or even current time, I think we have lost that talking to ourselves. And that will bring a great consciousness to yourself. And I think all of you, I keep telling my students also that you need to be, at least give 10 minutes for yourself and just think, what did you do today? What was wrong? What was right? And then try to improve. The second message that I just wanted to give you, I was reading one book, I don't remember the name, but it was written very nicely, कि राजापेक्षा साम्राज्य मोठे असते, राजापेक्षा साम्राज्य मोठे असते आणि साम्राज्यापेक्षा संस्कृती मोठी असते. राजापेक्षा साम्राज्य मोठे असते आणि साम्राज्यापेक्षा संस्कृती मोठी असते. मला असं वाटतं आज विश्वनाथ कराडजीने जे संस्कृती तयार केली आहे ती चिरकाळ टिकणारी आहे. आपलं त्यांचं जे स्वप्न आहे की आपण विश्वगुरू बनू, मला असं वाटतं की डेफिनेटली वी आर ऑन द वे अँड आय थिंक होल वर्ल्ड विल कम टू इंडिया अँड आय सी दॅट काइंड ऑफ सायन्स ॲक्च्युली ऑलरेडी देअर इन होल वर्ल्ड. सो विथ दिस आय वुड लाईक टू थँक फॉर whole of the organizing team to giving me this opportunity, and it was very pleasant, lot of learning from this session. Thank you very much to all the honorable panelists. I'm not sure whether we justified actually this discussion for last 1.5 hours, but it was wonderful time to, have your views here. Thank you very much. Thank you, Honorable Dr. Jayant Khandare, sir, for wonderfully and thoughtfully initiating the panel discussion. Thank you, esteemed guest, for speaking your mind and sharing your valuable insights. It has certainly enriched our understanding about the theme of the session. Now, ladies and gentlemen, yes, it's a time to welcome the UNESCO chair-holder, revered Professor Dr. Vishwanath Karad, sir, founder and chief patron, MITES, MIT Pune, to deliver a presidential address. Over to you, sir. फ्रेंड्स, मैं आभारी हूँ उषा दीदी का, दीपक रानडे, हमारी बहन सहस्रबुद्धे and my friend Jayant Khandare too, and all the members sitting on the dais. ये जर्नी शुरुआत हुई understanding the essence and philosophy behind the words like consciousness and reality. अंतिम सत्य क्या है? What is the Almighty God, the concept? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन the great philosopher sent of India, I repeat, Sant Jnaneshwara at the age of 16, the very first line, revealing the secrets of the universe. I like to understand the real nature of the whole universe. अंतिम सत्य की खोज में उन्होंने कहा, the entire universe is a manifestation of your intelligence and consciousness. दो शब्द है, उस पर ज़्यादा चर्चा में आप जानकार है. Again, for my students who are very scholarly students, one day they will come and sit here and possibly address the gathering. But at the same time, remember friends, when I said
philosophers and Dhaneshwara to Albert Einstein. Philosophers, Dr. Albert Einstein. Einstein, at the end of his life, after giving the theory of E equal to mc squared, the theory of relativity, you know the wonderful gift in the scientific world. At the end of his life, he says, friends, now I realize I believe in God. शब्द कैसा है? I believe in God who reveals himself in the orderly harmony of the universe and who manifests through each and every particle of the universe. Philosopher Sant Tukaram Maharaj, just 400 years back, he says, Anu Renu Thokada, Tuka Akasha Evada. I am the smallest of the small particle of the universe, like each and every atom, each and every cell. But how it can encompass the entire universe? And what a beautiful narration, friends, to understand how this universe is and what the universe stands for. सूरज की बात होती है, एक कण है भाई, छोटा सा. और ये जो कॉन्शियसनेस ऑन रियलिटी की बात चल रही है, मुझे बहुत खुशी है कि जयंत खंडारे जैसा ग्रेट साइंटिस्ट एंड दीपक नानरे जैसा दूसरा न्यूरोसर्जन, I don't know whether he has seen the neurons and the brain itself. He might have operated many times. But ये consciousness कहाँ छिपा है भाई? इसकी खोज में ये सारा माहौल है. मेरे सामने फूलों का गुलदस्ता है. While I was coming for the conference with my American friend, he just casually made a remark. He said, भारत बहुत सुंदर देश है. कैसा है? फूलों का देश है बोला. वेरी कैजुअल रिमार्क. भाई आप जरा जानने की कोशिश करो, मेरी आदत है, ये फूल, मट्टी तो एक ही है ना. सॉइल इज वन. नेचर ऑफ द सॉइल, द एनालिसिस ऑफ द सॉइल, यू नो. बट इतने अलग अलग रंग और सुगंध के फूल कहाँ से आए भाई? मट्टी तो एक ही है ना. तो अल्टीमेट रियलिटी की बात जिस ढंग से आइंस्टाइन ने कहा, श्रोडिंगर ने कहा, इनका चिंतन करो, लेकिन फ्रेग्रेंस अलग है. फिर ये भारतीय विशेषता है. इंग्लैंड अमेरिका में जाओगे तो फूलों को सुगंध नहीं होती है, बहुत से फूल दिखाई देते हैं. फर्क क्या है? तो यही अंडरस्टैंडिंग है. वैसे अपनी आदत कैसी है, चाल चलन कैसी है. क्यों ये झगड़ा अभी बात हुई कि भाई गुस्सा करना है क्या नहीं, राजनीति क्या होती है, टेंडेंसी क्या होती है, केमिस्ट्री ऑफ माइंड क्या होता है. ये सारी बातों का जिक्र करते वक्त ऐसे लगता है कि तेरा फर्ज क्या है. सुनो तो सही. एज ए टीचर, एज ए पर्सन सिटिंग हियर इन दिस डोम which is called the Philosophers and Dhaneshwara World Peace Dome. क्या नाम है? मेरा भी नाम दे सकता था मैं, मेरा पिताजी का नाम हो सकता था. लेकिन जीवन भर जिसकी खोज में चलते रहे, उसका सही मायने में जो उत्तर है, उसका जो आंसर है, I for myself, along with my great friend Vijay Bhatkar, the Param supercomputer scientist of the whole world, when we started looking at this nature, the law of nature is same. It cannot differ for me or for you. ये श्वसन क्रिया हो, नाता टूट गया नेचर से, जीवन खत्म. ये जन्म रियलिटी है क्या डेथ रियलिटी है? व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फॉल्स? ऐसा बहुत सुंदर चिंतन हुआ भाई. लेकिन आजकल हमारे मंदार साहब ने राजनीति के बारे में एक कमेंट किया. क्या स्थिति है तो देखो तो सही. भारत की नहीं बोल रहा हूं मैं, वर्ल्ड ओवर
कोरोना आ गया, it had a strength of only 20% भाई. एक ब्रिटिश साइंटिस्ट, मुझे मौका मिला 1 घंटा उनके साथ चर्चा करने का, who was a teacher and a greatest scientist of the world, whose disciple, a young scientist, ran away from UK, Britain, and went to China. And he was working in that very laboratory, Wuhan laboratory. I don't know, I'm not a great scientist in that sense. I do understand the mechanism and the functioning of the universe. But he said to me, Professor, remember this one or the virus which came out, and the entire world was behind the doors. The president, the prime minister, the journalists, the major journalists, and everybody, and even myself, we were hiding behind the doors. And he tells me, that British man, Professor, remember, if this virus comes out with about 30 to 40% strength of its own, क्या होगा? ऐसा निगेटिव थिंकिंग करना क्या नहीं, अपने अपने मन की बात है, वो सोचना है. लेकिन this very subject of understanding the reality and the ultimate truth, the very word consciousness itself, again I repeat, in the words of our son Jnaneshwar or Sant Tukaram Maharaj, they were not the PhDs. They were not the scholars or thinkers of some great school of London, but they were possibly the embodiment of the knowledge divine themselves. ऐसी सुंदर भाषा है भाई, मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोल रहा हूँ. Myself, I am grateful to every speaker here on the stage, and especially Usha Didi, Deepak, Sasrabuddhe Bahin ji, हमारे निकम साहब और सारे दोस्त. Thank you so much, friends. Grateful to you. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing your words of wisdom. Please give the Acharya Shrestha, the great teacher, revered Professor Dr. Vishwanath Karad, a big round of applause once again. Now it's time to invite Professor Milind Patre, sir, Associate Dean of School of Peace Studies, to propose the vote of thanks. Over to you, sir. Thank you. Thank you very much. The study of consciousness, one of the most intriguing studies, and no scientist, no visionary, no mystic can ever say that he or she has grasped the subject well. And the study goes on. And what a great fortune that in this 10th World Parliament, one of the sessions was related with the study of consciousness and establishing the school of consciousness for understanding the ultimate reality. Such a great session, such great luminaries, and I am here to propose the vote of thanks. Everyone spoke exceptionally well in their domain. There were many, many key points and impact statements, like Usha Didi ji said, Jaisa Chintan, Vaisa Jeevan. Mandar Apte sir said that once you are conscious, then you cannot do unconscious acts like anger, rage. So there were many, many takes. Vishwadharmi, Professor Dr. Vishwanath Karad sir, if you just look at the way he conducts himself, the way he sits, the way he walks, the way he speaks, I think if we have the eyes to see, we can see what is the definition of conscious alertness and awareness. I think that is the goal of life, that we should be like that. Gautam Buddha also says the same thing, that wakefulness, alertness is the only way to God. There is no other way. So I am here to thank everyone. Many students might be thinking why we are conducting the sessions like consciousness. Because it is the dream of revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir that the students coming to his institution should go out of the institution with 4 basic attributes: physically fit, mentally alert, intellectually sharp, and spiritually elevated, because then only they can be global responsible citizens of the earth wherever they go after the graduation. Yes, he deserves a great round of applause for such vision of, giving you all these attributes in your graduation. Yes, put your hands together, my friends, for such a vision of Dr. Karad sir.
Not many universities in the world has this vision for their students. And so thank you very much. I pay deep respect to revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir for giving us an opportunity for such vision. I deeply feel gratitude for Dr. Jayan Khandare sir, our own director of School of Consciousness, for organizing this panel discussion, Dr. Mandar Apte ji, Dr. Deepak Ranade ji. Dr. Deepak Ranade said that the problem of consciousness, the hard problem of consciousness, cannot be dealt only with scientific inquiry, but we need the mystic approach to it. Thank you very much. Being a neurosurgeon, these words really matter a lot. I really are thankful to Dr. Madhuri Sahasrabuddhe. You brought a very new vision that family is the seat of consciousness. It is the center of consciousness. Thank you so much, ma'am. Honorable Dr. B.K. Usha Didi ji, Honorable Dr. Ashok Giri ji, Honorable Ms. Anupama Vaidya ji, Honorable Shri Sanjay Bhosle ji, Honorable Dr. Ramesh Date ji, my anchor Ashish Patil, all the dignitaries sitting here, all the students, and everyone who contributed for this session. I'm really thankful to you, one and all. After this session is over, anchor will also tell you about the food arrangements, and the next session will be at 2:30 p.m. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Moving on, it's a time to capture this very special moment. I invite all the invited guests and dignitaries to please join with us for a special moment to capture the photograph, group photograph, please. Dear friends, let me share with you an important announcement. All the students are requested to join for the lunch at the right side of this Great World Peace Dome. And the invited guests and dignitaries, dean and directors of various institutions of MIRS are invited to join with us right downstairs of this hall for the lunch. Thank you so much. My dear friends, let me remind you that the next session is going to begin at 2:30 p.m. and the theme of the session is Role of Media in Establishing a Culture of Peace. Thank you so much. Thank you.